हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 2। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, यू कैन चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आई बटन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इन सारे फार्मूलाज के बारे में बात किया है। अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर फार्मूला को चेकआउट करना है, सो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव मेंशन्ड द टाइम स्टैम्प along with that particular formula. Let's quickly move to my screen and let's see the working of all those formulas. So the very first is using mid. So that is equal to, and I'll write mid. So what mid does is, let's say मेरे पास एक particular string text है, एक पर्टिकुलर मेरे पास लेट्स से फर्स्ट नेम का कॉलम है और ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। सो इस स्ट्रिंग में से आई वांट फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम इन बिटवीन द स्ट्रिंग, और लेट्स से मेरे को पहला कुछ फर्स्ट कैरेक्टर्स चाहिए, लास्ट कुछ कैरेक्टर्स चाहिए। सो आई कैन ग्रैब ऑल दोज कैरेक्टर्स बाय यूजिंग दिस मिड फार्मूला। सो ये मिड काम कैसे करता है? सो आई राइट इज इक्वल टू मिड एंड देन आई ओपन द ब्रैकेट, और मुझे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। देन आई हिट a comma and then the starting number, as you can see. So I'll have to provide कौन सा नंबर से वो कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स से ये वर्ड है अभिषेक। सो अभी ए का जो होगा वो होगा 1, बी का जो कैरेक्टर नंबर होगा वो होगा 2, एच का कैरेक्टर नंबर होगा 3, उसी तरह ये चलते रहेगा। सो आई हैव टू प्रोवाइड कि कौन सा कैरेक्टर से हम लोग को अपना टेक्स्ट को ग्रैब करना है। सो आई वॉन्ट hi from this particular text or this particular name. So my first word is h. So I'll have to write here and I'll have to count कौन सा character में h मौजूद है। So a is 1, b is 2 and h is 3. So I'll have to write 3 here, and then I'll have to write number of characters after that I want to extract. So after this the number of characters I want to extract is 2 including h. So मुझे यहाँ पे 2 enter करना होगा, then I'll have to close the bracket and I'll hit enter. So you can see hi is extracted. Now if I drag it to the very last, अगर मैं इसे drag करता हूँ, so similarly for all the other first name वो formula apply हो जाता है। सो लेट से एस एच जो आया है उसी तरह से आया है। सो द फॉर्मूला इज मिड एंड देन आई हैव गिवन B3 एंड देन आई वांट टू ग्रैब फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर, तीसरे कैरेक्टर से ग्रैब करना स्टार्ट करो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, एंड देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई वांट 2 कैरेक्टर्स आफ्टर दैट। सो ये दिस इज हाउ द मिड फॉर्मूला इज यूज्ड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज, लेट्स से एक पर्टिकुलर सेल में एक वैल्यू है और मुझे पता लगाना है कि क्या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नंबर है। सो फॉर दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज टेक्स्ट। सो ये अप्लाई करने के बाद इफ वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू अ पर्टिकुलर सेल, इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, एंड बाय ट्रू हम लोग को ये रिजल्ट मिलता है कि वो पर्टिकुलर सेल वैल्यू है दैट इज अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट फॉर्म। अगर वो फॉल्स प्रोवाइड करता है सो दैट इज सम अदर कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द स्ट्रिंग। लेट्स से आई विल जस्ट राइट दिस इज टेक्स्ट ऑन let's say this age value, and it should return false and it is returning false. So this is how is text is worked. Similarly it is kind of similar formula is number for all the numerical values. So if I apply is number and then I in the cell value I give this particular first name column, and this is a string data type value, and I'll hit enter after closing the bracket. You can see it is giving me false, and which is correct because this is a string और ये नंबर नहीं है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे is नंबर प्रोवाइड करता हूँ into this particular age column, it will provide me true. So this is how is text and is number is experimented out, और इसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर let's say we are confused कि एक particular column में either that is a string type or a number value, so we use this particular formulas. Let's move to the other formula, and that is this is a very interesting formula, and this is find. सो लेट्स से अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं। सो एग्जांपल के तौर पे अभिषेक एक पर्टिकुलर नाम है और इसमें मुझे पता लगाना है कि क्या एच आई कैरेक्टर मौजूद है इस पर्टिकुलर नाम में। सो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा इज इक्वल टू एच आई, देन मुझे यहाँ पे वो टेक्स्ट फीड करना होगा। सो व्हाट आई वांट टू सर्च, आई वांट टू सर्च एच आई, कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट नेम में एच आई
अगर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट मौजूद है कि नहीं है, सो मुझे ये पता लगाना है. नेक्स्ट आई हिट कॉमा and then I have to provide on which text do we want to search this particular find text. So hi मुझे किस particular text में find करना है. I want to find this in the first name. Then I'll hit select this particular thing and then I'll close the bracket and then I'll hit enter, and it will return me the character value from which that particular word is starting. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि एच आई में पहला वर्ड जो है वो है एच. सो ये रिटर्न कर रहा है 3 क्योंकि एच इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इट इज कमिंग एट 3. सो यू कैन काउंट 1 2. A is 1, B is 2 and H is 3. So that is why it is returning. What if I drag ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को टू द वेरी लास्ट? व्हाट डू यू गाइस थिंक क्या आना चाहिए? सो लेट अस क्विकली ड्रैग दिस टू द वेरी डाउन, और आप देख सकते हो कि एच आई मौजूद ही नहीं है ये फर्स्ट नेम्स वैल्यू में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू एरर. सो ये एरर प्रोवाइड कर रहा है. एक डिफरेंट फॉर्मूला है विच इज़ सिमिलर to search and that is used in alternative to find, because find फॉर्मूला में एक लिमिटेशन मौजूद है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. सो एच आई मुझे फाइंड करना था इस पर्टिकुलर फर्स्ट नेम में, जो कि मुझे 3 वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है और ये सही है. व्हाट इफ आई चेंज दिस एच टू कैपिटल वैल्यू, कैपिटल एच? सो आप देख सकते हो मैंने इसे बदल दिया है, एच को कन्वर्ट कर दिया है इनटू कैपिटल एच, एंड लेट अस हिट एंटर एंड यू कैन सी इट इज गिविंग मी एन एरर. सो ये एक लिमिटेशन है ऑफ द फाइंड फंक्शन. हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सो देयर इज अनदर फॉर्मूला दैट इज सर्च, जो कि केस सेंसिटिव नहीं होता है और वी कैन यूज इट इन अ सिमिलर फैशन. इट डज नॉट मैटर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वैल्यू इज इन कैप का अपर केस और लोअर केस, कैपिटल है या स्मॉल कैरेक्टर वैल्यू में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड दैट इज़ हाउ सर्च फंक्शन इज़ वर्क एंड इट इज़ गुड विथ रिस्पेक्ट टू द फाइंड फंक्शन. Coming to the next function, that is replace. So I'll just show you guys. I'll just try to replace. This is also a bit of interesting function. और ये क्या करता है? First we'll have to provide old text. से मुझे इस particular नाम में, अभिषेक में, I want to replace the middle I and S with 2 capital G. So the new string would be ABH capital G HEK. So for that I'll write the formula is equal to replace. I'll have to select the old text and then I'll have provide a comma. So what is the starting number which I want to replace first? So मुझे IS को replace करना है with capital G and capital G. So the very first value or value number for I is, that is 4. So A is 1, B is 2 character value, H का character value is 3 and I का character value is 4. So I'll write 4 and then how many characters I want to replace. So I want to replace 2 characters, that is I and S. So I'll write 2 here. And then what is the new text with which I want to replace I and S? And that is capital G and capital G. So I'll just write this and I'll close the bracket and I'll hit enter, and you can see I and S is being replaced with G and G. So that is how replaced is used many times. Let's move to the other functionality and that is using proper. तो कि ये जो full name है, सो फुल नेम का जो पहला लेटर्स है, लेट्स से अभिषेक का ए इज स्मॉल, कुमार का के इज स्मॉल, अक्षय का ए इज स्मॉल, सिंह का S is small. So I want to change the first letters of all these name to capital letters. So proper उस फॉर्म में यूज होता है. So I'll write is equal to proper and then I'll select the text and I'll hit enter. और आप देख सकते हो कि जो पहला लेटर रहता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, that is being converted into capital letters. So that is how proper is used. Let's move to the other function and that is REPT. So it is REPT. This is a very good function when
हम लोग को बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। सो नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ रिपीट। सो हम सबसे पहले तो आई जस्ट प्रोवाइड दी टेक्स्ट जो मुझे रिपीट करवाना है, एंड दैट इज़ मुझे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को बहुत बार एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मुझे लाना है। सो आई जस्ट प्रोवाइड द टेक्स्ट नेम एंड देन आई हिट कॉमा, और फिर हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रिपीट। लेट्स से मुझे 4 बार रिपीट करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट, आई राइट 4 एंड आई हिट एंटर। और आप देख सकते हो कि the text which I had selected, so that is C2 cell value is being repeated and joined 4 times, 1, 2, 3 and 4, and this is how repeat or rept is used. The next and the interesting function is the upper. नाम से पता चल रहा है, so एक particular स्मॉल कैरेक्टर वैल्यूज़ को ये अपर में कन्वर्ट कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में है। सो आई जस्ट सेलेक्ट इज इक्वल टू अपर एंड देन आई सेलेक्ट द टेक्स्ट और द सेल वैल्यू एंड आई हिट एंटर। और आप देख सकते हो कि जो भी स्मॉल कैरेक्टर्स में लेटर्स थे दैट इज कन्वर्टेड इनटू द अपर वैल्यूज। Similarly, vice versa is the lower character letters, और it works likewise। अगर एक particular टेक्स्ट है जो कि सारा कैपिटल लेटर्स में है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट टू लोअर लेटर्स, सो आई विल यूज लोअर। सो आई विल राइट इज इक्वल टू लोअर एंड देन आई विल सिलेक्ट ऑल दोस टेक्स्ट। सो लेट्स मुझे यही आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द लोअर कैरेक्टर्स एंड देन आई हिट एंटर। और आप देख सकते हो कि this is converted into small characters value. Let's move to the other function and that is using, so हमने पिछला लेसन में हमने सीखा था using the concatenate function। concatenate ना यूज़ करके भी we can join two strings, और वो कैसे है, वो इस तरह से I'll just write equal to and then I will select this particular word and then I will write and बीच में I'll just give a space bar between the first name and the last name. Then I'll again enter and I'll select the last name and I'll hit enter। और आप देख सकते हो कि वो particular name is being joined using and। So this is how we can use to join strings apart from using concatenate function also। Let's move to the next function and that is using exact। so only used in situations जब हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं और that is quite confusing और complex फॉर्म में है, पर we want to compare both the strings whether दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। सो एग्जैक्ट हैंडी आता है उस वक्त पर। सो आई जस्ट राइट इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट, आई सेलेक्ट द टेक्स्ट 1 और आई सेलेक्ट द टेक्स्ट 2। सो लेट से मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट किया एज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट 2। सो एग्जैक्ट विल कंपेयर वेदर दिस टेक्स्ट इज सेम एज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट और नॉट एंड इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। और डेफिनेटली ये दोनों टेक्स्ट सेम नहीं है, सो इट इज रिटर्निंग एज फॉल्स। व्हाट इफ आई जस्ट राइट अभिषेक इन स्मॉल कैरेक्टर्स एंड देन आई ओके, what if I'll just write Abhishek in small characters and then we will again use the exact formula and we'll just see whether this works or not। so for the very first I'll select this particular text and then the text in small letters and I'll hit enter and this is also returning as false। let us just change the very first as in capital letters and then we'll again use the exact statement। this is being converted into true because this formula is getting updated। so यहाँ पे हम लोगों ने a को चेंज किया, so it should be exactly the same। अगर एक particular letter है that is in capital letters in one string and it is in small letters in the other string, it does not work like that। let's move to the other formula and that is using the clean function। now clean we have, so what if let's say I want to print this particular sheet और यह इस शीट में काफ़ी सारा अनवांटेड और नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट या एलिमेंट्स मौजूद है। सो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि in column C you can see these are some these arrows are unprintable texts।
so this won't be getting printed. ये particular Excel sheet we want to get it printed, so clean is used in all those circumstances. उन सारे जगहों में clean का इस्तेमाल करते हैं when we want to clean the text or we want to get it into much more printable form. So this is how the clean formula is used. The last and the most important formula in the string functionalities of Excel is the value function. Whether it's any text into a number form. Example के तौर पे अगर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को दिखाना चाहूँ, सो आप देख सकते हो कि इन कॉलम बी आई हैव ऑल दी values which is present in a string format, but using the value function this is getting converted into a number value. So you can see this dollar sign is getting removed and $125.5 is coming into the number form. The most interesting one will be this 6 p.m. So you can see 6 p.m. is getting converted into 0.75 and you would wonder ये कैसे हो रहा है. So let's say 24 hours is equal to 1 unit, so 6 p.m. is equal to 0.75 units. So that is how it is. The timing is also converted into the number value, and this is super useful a lot of many times. So friends, this was all about the rest of the functions related to the string functionalities which is present in Excel. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगेगा इन योर डेटा एनालिटिक्स वर्क. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.